ओके जी, हसनैन नाजिश मौजूद है आपके साथ। इस वक्त मैं एक जूते के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये जूता है, ये वुडन शूज़ है। ये वुडन शूज़ ख़ास तौर पे बनाया जाता है एम्स्टरडेम में। और एम्स्टरडेम के साथ जो है वो एक गांव है, उस गांव की सैर कराने के लिए मैं आपके साथ आया हुआ हूँ। और देखिए क्या अजीब मंज़र है। ये वो जूते हैं लकड़ी के, जो यहाँ आम तौर पर सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इसको खड़ाऊँ भी कहा जा सकता है। देखिए ज़रा इसको। प्लीज़ टर्न द कैमरा हियर। यस, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जी, ये है वो ख़ास वर्कशॉप, वुडन शू वर्कशॉप। ये डी जानसे शांस, ये जानसे शांस जो है ये इस जगह के नाम है। हम देख रहे हैं ऊपर ये हॉलैंड का ये तिरंगा नज़र आ रहा है आपको। और ये वर्कशॉप है, आपको मैं इस वर्कशॉप का विज़िट कराऊंगा जी, कि यहाँ पे लाइव किस तरीके से जो है वो बनते हैं ये शूज़, ये जूते। मैं आपको अभी जान से शांस के इस जूतों का जो बनने का जो म्यूज़ियम है वो दिखाने के लिए लाया हूँ। ये भी एक ख़ास चीज़ है यहाँ की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कम ही ऐसा देखा होगा। जब आप म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं और इस वक्त सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर। और ओरिजिनल क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स कहा जाता है। हम उर्दू में इसको खड़ाऊँ कहते हैं और पहाड़ी ज़बान में इसको खड़ाऊँ ही कहा जाता है। ये देख लें आप। और ये जूते बनाने का म्यूज़ियम है और हॉलैंड में ख़ास तौर पे ये बहुत मशहूर है। ये उसके जो म्यूज़ियम्स के देखिए, बड़े खूबसूरत। ये जूता मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लगता है कुछ शाल वगैरह ये बड़े जो लोग हैं पहनते रहे होंगे इसको। और ये देखिए, ये जैसा लगता है कि मुल्तान के खुसे हैं, जिससे बड़ी बारीकी से शायद किया गया जी। ये देखिए बड़े खूबसूरत Everybody to the Wooden Shoe Workshop. Today I'm going to show you we make Novix Prize a wooden shoe. First of all, the wood that we use is poplar or willow. In this case, we use a fresh cut piece of poplar wood. You can see it's fresh cut because it cuts really easy, just like cheese. For the outside shape, we use large knives like this. For the inside, we use several sizes of so-called spoon scoops. To follow them out. Shoemaking was a real tough job back in the days. It took 3 to 4 hours for just one pair of shoes by hand. बाय हैंड्स कह रहे हैं, बनता है 3 से 4 घंटे लगते हैं एक जोड़ा जूतों का बनाने के लिए। We will use makes a copy of the outside wall of the shoe. It's the same system used for duplicating keys. We make a copy of the already existing model right over there.
outside shape shoe. Same system we use for the inside. Here you have it, the rough inside shape of the wooden shoe. The heel and toes we still cut off the traditional way with a large knife. 정리하는 게 떨어지니까요. 그러니까요. 쓸 수 있게 그렇죠. 근데 그 저기 신발을 위한 그 사람 중요하죠. Here you have it, the rough outside shape of the shoe. The wood is still quite wet. I'll try to show you. All water from the tree, and I promise you I did not spit in it, that's for sure. It needs to be dried for 4 weeks, then polished with a sandpaper belt. Here you have it. Completely polished wooden shoe. This shoe fits a child around 4 years old. Looks quite big for a 4-year-old. Wooden shoes are quite big. We wear them with thick woolen socks and 1 finger space in the back to know they fit well. We also wear them because they're warm, waterproof, and really strong. Thank you for listening. This was the Wooden Shoe Workshop. Enjoy your stay. Well done. Well done. Well done. Well done. Marvelous. Well, shoemaking is a fun job to do, and you can follow me on Instagram, jobapun.b. जी ये सिर्फ आप 2.5 यूरो में ले सकते हैं इस जूते को अगर आपको चाहिए तो। और ये देखिए सजा के रखे हुए बहुत ही खूबसूरत 30 यूरो ईच तकरीबन ये बनेगा जी मुख्तलिफ साइज़ में इंतहाई खूबसूरत। मेरा ख्याल है ये बजाय कि इसे पहनने के डेकोरेशन पीस के तौर पर ज़्यादा बेहतर लगेंगे आपको। मस्ट वॉच प्लेस, यकीन कीजिए यहाँ आए तो यहाँ ज़रूर आए। जूते बनते हुए देखिए, इनकी एग्जीबिशन देखिए और साथ ही साथ इन जूतों को ज़रूर ख़रीदिए आप। ये आपको नज़र आ रहा है। जी साथियों, मैं आपके साथ मौजूद था, सुलेमान नाज़िश आप देख रहे हैं और मैं जो है वो मौजूद हूँ यहाँ पे
जूता मेकिंग की एक फैक्ट्री में जहाँ ये क्लाउंस जो ना खासतौर पर बनते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अगले किसी नए सेगमेंट में नई किसी जगह पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए असली नाजिश की तरफ से बाय। ये मार्केटिंग का तरीका देखिए, बहुत अच्छी उन्होंने न सिर्फ के एग्जीबिशन यहाँ रखी हुई है, डिस्प्ले सेंटर भी इनका यहीं है और यहाँ से आप जब चाहें चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। ये ट्यूलिप्स हैं जो यकीनन ओरिजिनल नहीं है। इट इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस जी, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके भी घरों में शायद मौजूद होंगी। ये देखिए 3.5 यूरो में ये आपको मिलेंगी। एक खूबसूरत डिस्प्ले क्या खूब किया हुआ है, रंगों की बहार आपको नज़र आती है। तो वो यहाँ आपको इस तरह की म्यूज़ियम में नज़र आएगी। मैं असलियत नाज़िश आपके साथ हूँ जी, और आप देख सकते हैं ये बच्चों के खिलौने, ठीक है। ये कुछ हमारे अरब बहनें जो हैं वो यहाँ आई हुई है। ये 3.5 यूरो का एक सूवेनियर शॉप्स जगह आपको नज़र आएंगे। छत पर भी उन्होंने टंगी हुई और क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या उनकी जगह है जी। सीरो फिलहाल बार बार आपको तरगीब दूंगा कि ज़मीन की सैर करें आप लोग। कोडक फिल्म्स, हाँ जी। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ रंग एम्स्टर्डम के। That would make you nervous. Oh no, I downloaded it on Netflix. Oh yeah. There you go. Oh, you can get Oh, what is it? You see the street princess? That's not Amsterdam. That's the street problems mental. I find the place very nice. This is the first time I've seen clouds, and I am impressed by how it was made. It's very nice. That's all.